Okay, friends, in this video, we are going to discuss about preparation of character tables for point group C3b. So we know that in C3b point group, it consists of six symmetry elements like E, C31, C32, sigma V dash, sigma V double dash, sigma V triple dash. So these C3 and C32, these both belongs to axis of symmetry class, and these three particle plane belong to plane of symmetry class, and this is the identity. Okay, so these six symmetry operations can be grouped under three classes like E, C3, and 2C3 and 3 sigma V. And we know that order of group E is 6. What is the order of group? Order of group क्या होता है? Order of group is the total number of symmetry elements. जैसे कि we know that here in C3 group there is a one E, then C3, C3, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So that's the order of point group of C3B is 6, and their classes are 3E, 2C3, and 3 sigma V. These are the classes. So we can draw a table like this. Here we will write C3B point group, a name of point group, and here we will write classes belongs to that particular group. As we know that whenever we want to construct a character tables, we have to prepare a character table in this manner, like here we write point group. Here we write classes, classes of point group. Here we write IRs, Mulliken symbol of IRs, Mulliken symbol, Mulliken symbol. So, Mulliken symbols of IR. IR means irreducible representation. And here we write character of IRs. Irreducible representation की character को अपन यहाँ लिखते हैं. Then in another column, here we write basis function यहाँ पर okay, basis function, and then यहाँ पे अपन लिखते हैं quadratic function, that is quadratic function. Okay, so with this manner we will try to prepare character table for C3b point group. So here we will write C3, here we will write classes of this C3b point group. Now we will use the postulates of GOT. What is the GOT? GOT is the great orthogonality theorem. Great orthogonality theorem. और इसके क्या होते हैं? चार postulates होते हैं generally, mainly actually. So there are four postulates of GOT, and using these four postulates, we can construct a character table for any point group. So we will use first postulates of GOT. There's that says that number of IRs are equal to number of classes. यानी कि किसी भी point group में irreducible representation उतने ही होंगे जितने की classes है. So number of IR is equal to number of classes. Here we can see that in C3 point group E, 2C3, and 3 sigma V, there are three classes. So that's why according to first postulates of GOT, number of IRs equal to number of classes. There will be three IRs. These are represented by tau. Okay, so tau 1, tau 2, and tau 3 means IR1, IR2, and IR3. So there are three irreducible representation because it has three classes. Fine. Suppose यहाँ पे आगे चार classes होती है, यहाँ पे अपन IR tau 4 तक जाते हैं, फिर यहाँ पे 5 होती है, 5 तक जाते हैं, 2 होती है, 2 तक ही जाते हैं. That is the thing. So in C3b point group, and according to above table, और मान लेते हैं, suppose that the character of E are K1, K2 and K3. मान लेते हैं अपन की character of E के लिए जो irreducible characters है, those are K1, K2 and K3. For C3 axis of symmetry, characters are L1, L2 and L3, and similarly for sigma V, these are M1, M2 and M3. So we will write their imaginary characters like E के लिए अपन लिखेंगे first IR के लिए K1, K2 and K3 respectively 2 and 3, and cis sigma axis of symmetry के लिए we will write L1, L2 and L3.
एंड सिग्मा वी के लिए विल राइट m1 m2 एंड 3 अपने मान लिया बिकॉज अपने को वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ करेक्ट टेबल दैट्स व्हाई सम थिंग्स वी हैव टू इमेजिन और सम थिंग्स वी हैव टू सब मानना पड़ता है ओके फाइन so just a minute okay we know that dimensions are the character of E अब जो dimensions होती है dimension यानी कि 1D 2D 3D and dimensions cannot be zero dimension cannot be zero ओके डायमेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी एज वेल एज नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं होगी बिकॉज अपन ने सुना है कि 1D होता है 2D होता है 3D होता है बट वी नेवर हर्ड दैट देयर इज 0D or negative 1D or negative 2D or like that okay so dimension cannot be zero or negative now what are the dimensions dimensions are the dimensions dimensions are character of E. E का जो character होता है that is dimension. Okay, fine. So now we will understand that how we can implement second postulates to construct a corrected table. Now, what does it say? Second postulates of great orthogonality theorem says that some of the squares of dimensions of the irreducible representation. What is saying? It is saying that dimension, some of the squares of dimension we have understood that dimension are the character of E. ई का जो करेक्टर होता है वही डायमेंशन होता है फाइन सो ई का करेक्टर अपन ने उधर क्या माना है k1 k2 एंड k3 माना है फाइन सो इनके स्क्वायर का सम जो होगा वो उसके ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा सो वी कैन राइट द समेशन ऑफ ki स्क्वायर ki क्या मान लिया अपन इन सबका सम मान लिया ओके तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इज इक्वल टू h so this comes from second postulate of GOT. Fine. So in case of C3 with order of point group is 6. So that's why we can write the K1 square plus K2 square plus K3 square is equal to 6. Okay. And we know that dimension cannot be negative or zero. Dimension can be negative or zero. Now what to do? We have to do that. We have to satisfy this equation by putting some values for K1, K2 and K3. If we put 1, 1, 1 for K1, K2 and K3, then we can satisfy this equation. Okay, like this. So summation of K1 square is equal to 1 square plus 1 square plus 2 square. So 1 square 1, 1 square 1, 1 square, 2 square is equal to 4. So 1 plus 4 is equal to 6. So with this way, we can satisfy this equation. We will put 1 for K1, 1 we will put K2 for 1 for K2 and we will put 2 for K3 and then only we can satisfy this equation. So we will write the value for K1, K2 and K3. Fine. So now third postulates of GOT says that sum of the squares of characters of all irreducible representations are equal to order of guru. यानी कि what is saying? It is saying that जितने भी characters हैं, for example अपन ने माना है K1, L1 और M1. Okay, यही माना था अपन ने right. So ये है टाउ वन के या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट के ये कैरेक्टर है सो इन सब के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू होना चाहिए यानी कि k1 k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर सॉरी l2 स्क्वायर l1 स्क्वायर प्लस l2 m1 स्क्वायर सॉरी दिस इज m ओके सो m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होना चाहिए राइट सिमिलरली k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस m2 square should be equal to 6 fine so and similar like that or so on okay so we can write k1 square plus l1 square plus m1 square is equal to 6 now we have to satisfy this equation by putting some imaginary number here and then we should satisfy this equation okay so fine so now we will put 1 for k1 we know that k1 is already 1. Okay, L1 we will put 1, M1 if we will put 1, then we can satisfy the equation, this equation number 2. Okay, so now what is now
अब इसको अपन सोल्व करेंगे कि इसको अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड. फाइन. सो नाउ व्हाई आई विल राउट हियर वन एंड वन एंड वन, बिकॉज अगर आपने करेक्ट टेबल देखा है, दिस इज द सॉरी सिमेट्री एलिमेंट जो कि क्लासों में है, ई जो है दैट इज वन ओनली. ओके, इट इज वन. बट जो C3 है दैट इज टू, एंड जो थ्री सिग्मा सिग्मा वी जो है दैट दीज आर थ्री. फाइन. सो दैट्स व्हाई अगर अपन ने यहाँ पे K1 जो है ऑलरेडी वन है, सो अपन ने इस इक्वेशन में K1 की वैल्यू वन रखी है. फाइन. वन प्लस अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ GOT. ओके फाइन. सो C3 की वैल्यू भी C3 में L1 की वैल्यू अपन ने वन माना है, सो दैट्स व्हाई वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. व्हाई डिड वी राइट हियर लाइक दिस, बिकॉज ये टू टाइम्स है, सो दैट्स व्हाई अपन ने इसको टू टाइम्स लिखा. फाइन. प्लस ये थ्री टाइम है, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट फॉर थ्री टाइम्स. वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री. या फिर इसको अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नो मैटर. टू इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. सो इक्वेशन क्या आ गई, वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स. सो दैट्स व्हाई with this way we have satisfied this equation. So that's why L की वैल्यू वन इज ओके, सिग्मा वी की जगह यहाँ पे जो M1 था उसकी वैल्यू भी वन इज okay. And similarly we can solve these two also. But now we will understand the fourth postulate, how it is implemented to for preparation of character table. Now what does it say? It says that fourth postulate of orthogonality theorem says all IRs equal to all IRs are equal to, or all IRs are orthogonal to each other. So fourth postulate says that all IR is equal to and those are orthogonal to each other. What does it mean? It means that tau 1 into tau 2 is equal to 0, tau 2 into tau 3 is equal to 0, and tau 2 into tau 3, tau 3 into tau 4, या फिर tau 1 into tau 3 is equal to 0. So इसका मतलब होता है कि these are orthogonal to each other. अब इनको समझते हैं कि ये आता है कैसे. For understanding tau 1 into tau 2 is equal to 0 means इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, so that we should be, or they will be equal to 0. So K1 into K2 is equal to L1 into L2 into plus M1 into M2 should be 0. It means these are orthogonal. So tau 1 and tau 2, that's why अपन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उनकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे. जैसे tau 1 की वैल्यू है E के लिए K1 एंड K2 है tau 2 के लिए, so that's why K1 plus K2. यानी कि ऐसे ऐसे अपने को मल्टीप्लाई करने का है एंड उनको सम करेंगे, so that should be equal to 0. तो these will be orthogonal to each other. Let's solve tau 1 into tau 2 is equal to 0, यानी कि K1 plus K2, K1 into K2 plus K1 into L2 plus M1 into M2 should be 0. Now we will try to solve it by putting the value of K1, K2, L1 and M1 from above table. We have that अपने को पता है कि K1 की वैल्यू क्या है, 1 आई थी, K2 की वैल्यू 1 आई थी, L1 की वैल्यू 1 आई थी, M1 की वैल्यू 1 आई थी. So 1 into 1, ये अपने क्या लिया है, K1 into K2 plus L1 into L2 plus M1 into M2 is equal to 0. So K1 की वैल्यू अपने को पता है 1 है, K2 की वैल्यू अपने को पता है 1 है, L1 की वैल्यू अपन ने निकाली 1 है, L2 की वैल्यू अपन ने निकाली, that's why it is as it is here. 3 into M2. Okay. इसकी M1 की वैल्यू कितनी है, 1, बट वहां पे 3 है. Okay, so that's why M2 की वैल्यू भी अपने को पता नहीं, इसका भी अपने को पता नहीं. Now, so if we consider the value 1 for L2 and -1 for M2, अगर -1 M2 की वैल्यू को कंसीडर करें और 1 की वैल्यू एनी हाउ, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है. So अगर L2 की वैल्यू if we consider 1 and -1 for M2, then equation becomes like this: 1 into 1 प्लस 2 क्या है, ये कोफिशिएंट है जो यहाँ से आता है, दिस इज 2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि L2 की वैल्यू अपने कंसीडर कर ली है 1, प्लस 3 ये क्या है, कोफिशिएंट है सिग्मा का. सो 1 इंटू -1 इससे M2 की वैल्यू कंसीडर की. अब देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो नाउ विद दिस वे वी कैन satisfy this equation. So
L2 is 1, okay, and M2 is equal to -1. It is okay. Now we will put the value. So K1 की value 1, K2 की value 1, K3 की value 2, L1 की value 1, L2 की value 1, M1 की value 1, -1 for M2. Now we have to find out L2 and L3 and M3. So ऐसे ही अपन उसके अगर कंसीडर करें L2, ये कैसे निकालेंगे अपन L3 and M2? L3 and M2 अपन निकाल देंगे tau 2 into tau 3. Okay, so K2 into K3 plus L2 into L3 plus M2 into M3. अगर ऐसे करेंगे अपन तो इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं K1 एंड K2 की कितनी है 1 है ओके प्लस L2 की कितनी है 1 L3 की कितनी है अपन ने सपोज इसकी वैल्यू माइनस मान ली -1 ओके तो इसके आगे अपन को कोफिशिएंट लगाना है 2 प्लस इनटू है ओके -1 सो M2 की वैल्यू कितनी है -1 है ऑलरेडी अपन ने पहले निकाल ली है और अगर अपन इसको 0 मान लेते हैं M2 की वैल्यू और यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देते हैं सो इट विल बी 1 प्लस -2 and this is minus this whole will be 0. Fine. So now what is this equation satisfy हुई या नहीं हुई देखो 1 minute equation satisfy हुआ 3 into 0 0 and 2 and 1 1 minus 1 and -0 ओके यहाँ पर ना मिस्टेक कर दी देखो यहाँ पे टाउ 3 की वैल्यू क्या है 2 है ओके सो वी विल राइट हियर 2 नाउ इट बिकम्स 2 and 2 plus -2 minus 0 it means 2 minus 2 is equal to 0 so if we put the value -1 for L2 L3 and 0 for M3 so we can satisfy this equation with this way so that's why अपने पास ये सारे के सारे characters आ गए so this is the character table for C3 point group but we cannot write tau 1 tau 2 and tau 3 so instead of this क्यों नहीं लिख सकते हैं अपन क्योंकि character tables बनाने का what is the rule रूल क्या है कि अपने को यहाँ पर Mulliken symbol Mulliken Mulliken symbols लिखने होते हैं ओके so tau Mulliken symbol नहीं है so that's why we cannot write tau 1 tau 2 tau 3 instead of this we have to write Mulliken symbols so now we will understand कि what are the Mulliken symbols and how can we replace this tau 1 tau 2 tau 3 by Mulliken symbol okay so this Mulliken symbols in this character table C3 point group but we cannot write like this okay so in this case tau 1 and tau 2 the character of E is 1 Mulliken symbol लिखने का रूल क्या होता है रूल फर्स्ट रूल क्या है इफ E की जगह E का जो करेक्टर है फॉर पर्टिकुलर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर वो 1 है तो इट वुड बी ए और बी ये लिखेंगे अपन उसकी जगह अगर ई का करेक्टर 2 है तो वी विल राइट ई का करेक्टर अगर 2 है तो अपन लिखेंगे उसको ई फाइन इफ कर ई का करेक्टर 3 है करेक्टर का मतलब क्या है डायमेंशन है भाई इफ इट इज वन डायमेंशन देन वी विल राइट ए और बी इफ इट इज सेकंड टू डायमेंशन देन वी विल राइट ई एंड इफ इट इज थ्री डायमेंशन देन वी विल राइट ट्रिपलेट टी फाइन सो नाउ जस्ट चेक ई का करेक्टर क्या है 1 है एंड 2 है फाइन सो ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं ए और बी बट यहाँ पे 2 है सो 2 का करेक्टर अगर ई का करेक्टर अगर 2 है देन वी विल राइट ई इंस्टेड ऑफ टाउ 3 so now we have a or b for tau 1 a or b for tau 2 and e for tau 3 now the question is what will be the right a or b so उसके लिए just we need to see the principal axis अब a लिखेंगे या b लिखेंगे so second rule क्या कहता है rule number 2 if principal axis is equal to प्लस साइन के साथ है
नंबर चाहे कोई भी हो, 1 2 3 4 5, नो मैटर। बट अगर प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या होता है? सीमेट्रिक। प्लस साइन का मतलब है सीमेट्रिक। फाइन। सो अगर प्लस साइन है तो वी विल राइट ए, अगर नेगेटिव साइन है वी विल राइट बी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक। सो जस्ट चेक प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसमें। वी नो द प्रिंसिपल एक्सिस इज C3। अब C3 में पॉजिटिव है, इसके साथ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव, इसके साथ भी कुछ, इसका मतलब पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए और बी की जगह अगर पॉजिटिव होता है तो वी विल राइट, क्या लिखते हैं अपन? ए लिखते हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट ए। ये भी पॉजिटिव है तो ए। बट इस केस में क्या, ई ऑलरेडी है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो वी विथ यूजिंग दिस रूल नंबर 2 वी have assigned the A and E Mulliken symbol. Now come to the subsidiary axis. What is the rule number 3? What rule number 3 says, if the subsidiary axis is positive, positive का मतलब सिमेट्रिक। ओके, पॉजिटिव है सब्सिडियरी एक्सिस, मतलब कोई दूसरी एक्सिस अगर प्रेजेंट है तो वो अगर पॉजिटिव है तो वी विल राइट 1, और सबस्क्रिप्ट में लोअर सबस्क्रिप्ट। एंड अगर ये नेगेटिव है सब्सिडियरी एक्सिस तो लोअर सबस्क्रिप्ट में अपन लिखेंगे 2। ओके, सो नाउ जस्ट चेक द, but here in this case C3b point 2 there is no subsidiary axis, so we cannot use such kind of thing. So in this case when subsidiary axis is not present, then we will see the plane of symmetry. We will see the plane of symmetry. Fine. अब plane of symmetry POS अगर पॉजिटिव है उसका करेक्टर, देन वी विल राइट 1। नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एंटी सिमेट्रिक, पॉजिटिव का मतलब सिमेट्रिक। सो अगर नेगेटिव है तो 2 किस में लिखेंगे? लोअर सबस्क्रिप्ट। नाउ जस्ट चेक, ये सिग्मा वी है, इसका करेक्टर क्या है? पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? 1 लोअर सबस्क्रिप्ट। अब इसका करेक्टर क्या? नेगेटिव है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट अपन लिख देंगे 2, और ई के साथ तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, सो वी विल नॉट राइट एनी। फाइन। सो विद दिस वे अपन ने ये भी असाइन कर दिया कि 1 and 2 सबस्क्रिप्ट में कब लिखेंगे। नाउ कम टू दी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसके लिए लिखते हैं? जस्ट लेट्स डिस्कस। तो इन अबव टेबल द कैरेक्टर्स ऑफ प्लेन फॉर आई आर पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गए, एंड वी विल राइट 1 and 2 ये हो गया। रेडी? फाइन। नाउ वी हैव टू सी द कैरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इट इज सिमेट्रिकल, मींस अगर पॉजिटिव साइन है तो वी विल राइट जीराड जी। अगर नेगेटिव साइन है मतलब एंटी सिमेट्रिक है, देन वी विल राइट यू। सो बट इन दिस केस देयर इज नो center of symmetry, that's why in this case no center of symmetry, that's why we will not write uh, Girard or, so in this case we will not write G or Girard because here there is absence of center of symmetry. Now we see the, ये हो गया। Okay, fine. So now here there is no center of symmetry, that's why we will avoid it. Now we have to put prime यानी कि dash और double dash, prime and double prime. So for assigning prime and double prime we have to check molecular plane। molecular plane, अब molecular plane क्या होता है? molecular plane, अगर molecular plane प्रेजेंट है और प्लस पॉजिटिव साइन है यानी कि सिमेट्रिक है, तो वी विल राइट प्राइम ओनली। एंड इफ इट इज नेगेटिव यानी कि एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, देन वी विल राइट डबल प्राइम। अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। फॉर एग्जांपल C3b की अपन बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन NH3। NH3 बिकॉज NH3 बिलोंग्स टू C3b पॉइंट ग्रुप। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल शेप होता है। ओके, पिरामिडल शेप होता है। फाइन। सो मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होगा? ऐसा प्लेन होना चाहिए जो सब को रिफ्लेक्ट करे एक साथ, और मिरर इमेज आनी चाहिए। फाइन। सो बट ये क्या प्लेन में नहीं होते हाइड्रोजन? सो अगर प्लेन अगर ऐसा रखेंगे जेड और एक्स डायरेक्शन में, जेड और एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन तो पीछे की साइड होंगे, ये थोड़ा सा आगे की साइड। दैट्स व्हाई ये पूरा ये प्लेन जो होगा वो पूरे को नहीं
रिफ्लेक्ट कर पाएगा एज इट इज. सो ऐसा प्लेन विच कैन रिफ्लेक्ट होल मॉलिक्यूल, और होल मॉलिक्यूल को वो पास कर सकते हैं, इमेज आ सके, वैसा प्लेन कहलाता है मॉलिक्यूलर प्लेन. फॉर एग्जाम्पल H2O की बात करें अपन, या BF3 की बात करें, BF3, या BF3 की बात करें. सो BF3 में क्या होता है, प्लेनर है. सो प्लेनर है तो अपन यहाँ पे अगर मिरर लगाते हैं पूरा, सो मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा. फाइन. सो ये BF3 में तो प्रेजेंट है, बट अमोनिया में प्रेजेंट नहीं है. अमोनिया में C3 पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता. सो C3 पॉइंट ग्रुप में प्लेन ऑफ सिमेट्री, molecular plane is absent. That's why we cannot assign prime or double prime. So the character tables will be as it is like this. Now we have to put basis function as well as क्वाड्रेटिक फंक्शन. उनकी कैलकुलेशन थोड़ी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, कंप्यूटर से होती है. सो अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ यहाँ तक ही पूछा जाता है. इफ यू विल नॉट राइट लाइक दिस, इट वुड बी ओके. बट मैं आपको बता देता हूँ कि जेड, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ये जो होते हैं वो एक्स वाई जेड ये होते हैं ट्रांसलेशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल कोऑर्डिनेट्स या फंक्शंस. जो आर एक्स है, आर वाई है, आर जेड है, दीज आर रोटेशनल, रोटेशनल. ओके. एंड जो स्क्वायर की फॉर्म में इस माइनस वाई स्क्वायर या डी एक्स वाई हो सकता है, या डी जेड हो सकता है. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके. जो जो डी एक्स स्क्वायर, डी ऑर्बिटल्स वाले होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइक दिस, डी एक्स वाई वाई जेड, मतलब डी तो नहीं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये होते हैं, इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस. क्वाड्रेटिक फंक्शन जो ये इस कॉलम में लिखे जाते हैं. फाइन. और इस कॉलम में बेसिस फंक्शन, बेसिस फंक्शन आपको बताते हैं ट्रांसलेशन है रोटेशनल थिंग्स. और ये बताते हैं एप्लीकेशन जब अपन डिस्कस करेंगे कि विच वाइब्रेशन मोड विल बी एक्टिव, रामन एक्टिव और आईआर एक्टिव. सो उस केस में अपन दीज वी विल डिस्कस. होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. एंड इसमें कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, क्वेरी हो कि आपको कोई चीज समझ में नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video. Please like and subscribe the channel.